Hello students. In today's video we will do multiples as the factors we have already done. If you want to know about the factors, you can follow the link given in the description below. So let's come to the topic. Multiple. A multiple of a number is the product we get when this number is multiplied by any other number. Here you just note one thing: for finding the multiple of a given number, just keep adding the same number again and again or multiply it with any other number. आपको याद रखना होगा कि मल्टीपल्स सिर्फ टेबल्स हैं, जो टेबल्स अब तक आप लोग याद करते आए हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हम 6 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करना सीखेंगे। दोनों मेथड से मैं आपको बताऊंगी। हम एक तो नंबर को ऐड ऑन करके मल्टीपल फाइंड आउट कर सकते हैं और दूसरा हम मल्टीप्लाई करके। लुक हियर, व्हेन आई ऐड 6 to 6 I get 12. 6 plus 6 plus 6 18. Now I will add 6 4 times. 6 plus 6 plus 6 plus 6, that is 24. And in the same way I can find any number of multiples. Now coming to the second method, 6 multiply 1 is 6. 6 multiply 2, the result is 12. 6 multiply 3, 18. And when I multiply 4 with 6, I get the result 24. 6 multiplied by 5, 30, and so on. So these are the two methods. You can opt any of them. Multiplication is quite easy. चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हम 7 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मल्टीप्लिकेशन इज़ एन ईजी वे टू फाइंड द मल्टीपल्स, बट एडिशन भी ईजी होता है। आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। मैंने मल्टीप्लिकेशन चूज़ किया। व्हेन आई मल्टीप्लाई 7 with 1 I get 7, and 7 multiply 2 14, 7 multiply 3 21, 7 multiply 4 28, and in the same way when I multiply 7 with 5 I get 35. So 7, 14, 21, 28 and 35. These all are the multiples of 7. Let's try to understand with one more example. In this example, we will find the multiples of 9. 1 time 9 is 9. 9 twos are 18. 9 threes are 27. 9 fours are 36. 9 fives are 45. 9, 18, 27, 36 and 45. These are the multiples of 9. So, I hope you understand the topic now. There are some points to be remembered. A number is multiple of itself. Every number is a multiple of 1.
Every multiple of a given number is always equal to or greater than the number. Every number has infinite number of multiples. So today we have done multiples. In my upcoming video, we will discuss prime number and prime factorization. Thank you.